Today we will talk about the history of microbiology. There are some scientists, their contributions are important. First, Antony van Leeuwenhoek. You heard the name of Antony van Leeuwenhoek probably. Antony van Leeuwenhoek, he is called the father of bacteriology and protozoology. And father of microbiology is Louis Pasteur. So Antony van Leeuwenhoek, he was actually a citizen of Holland, Dutch citizen, Netherlands যেটাকে বলে ডেভড সিটিতে ছিলেন এনার অভ্যেস ছিল হবি ছিল রাদার লেন্স বানানো he used to make lenses just for as a hobby purpose just for playing. And actually his father was a textile dealer, so he was also a textile dealer. But in the meantime, he used to make lenses of different types. And by those lenses, he made a microscope, interesting microscope, which looked like this. This microscope is so small, it will fit into your palm, this size. So this microscope had, what is this? This is the back side of the microscope, and this is the side view. So you can see here is a hole. In that hole, the lens was fitted. Okay, in this hole here, the lens was fitted here in this hole. Okay, this is the lateral view, I mean side view, and this is the pointer, the screw at the tip of which Leeuwenhoek used to put the specimen sample, drop of maybe any liquid, teardrop, saliva, raindrop, whatever water sample he used to got from anywhere. You put that sample here, isn't it? Here, and you can bring this pointer near to the lens, away from the lens, up and down using these screws. Focusing screw. You need to focus now. What do we do with a microscope? We take our sample on a slide, and there is a lens over there, the objective lens, and we look through the eyepiece lens. Okay, and then you, with the help of that screw, with the help of that, you bring the sample in the focus of the microscope. Okay, so that you can view it properly. So that thing was done by using these screws. So, and you used to see from this side. From this side, your eye is on this side. And he observed many different kinds of bacteria, protozoa, algae, etc. These are the drawings of that. These are his own drawings. Okay, so you can see how beautiful. These are the cocci. You know what is cocci? Spherical bacteria. So here he has also kept in mind how small they are. So he has drawn very small sized cocci like this. And again he drew this bacteria. This is a little bit bacillus as well as coccus, little bit like this. This is called coccobacilli. I mean neither bacilli, neither coccus. I will say it is bacilli because it is more a bacilli than a cocci. There are some which are oval like this, which are coccobacilli. I mean they are not completely spherical. They are not, neither they are rod shaped. So they are coccobacilli. So he saw this bacteria moving like this in this direction. यहाँ से ऐसे मूव करते हुए ऐसे चला गया, उसको उन्होंने ड्रॉ किया. यही है, तुम लोग जब when you observe under microscope, whatever thing you are seeing while doing your practical or outside, or you whatever you are observing, you should observe as a scientist. You should think that you are a biologist and your observation will be different from a layman's observation of a biological sample, of a natural phenomena. Isn't it? So when you are given a certain biological sample to study under the microscope, your drawing, your way of observation should be like a scientist, a biologist. Means when you will draw, you draw in a proportion. And if you can mention what is the size, that will be very interesting also. Suppose you have taken a photograph of a
of a tree, of a big tree. The photograph will be this small. Anyone who never had seen that tree will not be able to make a size. What is the actual size? What should be the actual size of that tree? If it is not mentioned over there, that it is 1 by 200 times small. Suppose you mention in the photograph, you mention there into 1 by 200. That means this photograph is 1 by 200 times smaller than the actual tree was. समझे? तो ऐसे किसी भी ड्राइंग में हम लोग साइज मेंशन करें तो अच्छा रहता है. बहुत सारा बुक में तुमको मिलेगा फ्लावर का ड्राइंग की, छोटा सा इतना सा स्मॉल एक एंथर है, उसको तुमने इतना बड़ा ड्रॉ किया, तो उसमें तुमको लिखना होगा कितना गुना ड्रॉ किया, कितना गुना बड़ा ड्रॉ किया. अप्रोक्सीमेटली एकदम सही सही करने के लिए हम लोग करते हैं एक ग्राफ पेपर, एक स्लाइड के नीचे एक ग्राफ पेपर चिपका देते हैं, मिलीमीटर साइज का ग्राफ पेपर. उस पर जब हम सैंपल को रखेंगे तो कितना मिलीमीटर का है हमको पता चल जाएगा. और जब हम ड्राइंग करेंगे तो वो कितना मिलीमीटर का है वो हम माप सकते हैं स्केल से. तो कितना गुना हमने ड्रॉ किया ये निकाल सकते हैं, एक्यूरेट निकल जाएगा. বুঝতে পারলি? তো এই ড্রয়িং এভাবে যদি মেনশন করা থাকে কোনো একটা ড্রয়িং তাহলে ওটা সাইন্টিফিক বলা হবে. अच्छा, इन्होंने स्पाइरोकीटी, इस तरह के स्पाइरल बैक्टीरिया स्पाइरोकीटी ड्रॉ किया, और रॉड शेपेड बैक्टीरिया मिला, उनको फिलामेंटस बैक्टीरिया मिला. तो ये सब देखने के बाद he called them animalcules because before him there was no idea about bacteria. There was the idea about there are microorganisms, invisible creatures. There are invisible creatures because some diseases are caused by that. ये सब बात पहले बोला जा चुका है. इसके बारे में ल्यूक्रेटियस हैं, और इंडियन लिटरेचर में भी बहुत सारा पुराना तुमको मिलेगा उस तरह से. विषाणु के बारे में मतलब कुछ विषैला चीज़ जो हवा में है. ल्यूक्रेटियस ये रोमन फिलोसोफर थे, 98 to 55 BC before Christ. Okay, he said that that diseases are caused by some kind of invisible living creatures. रॉजर बैकन ये 1220 1292, कितना टाइम गैप है देखो, ये 1200 ईयर्स का 1100 ईयर्स का टाइम गैप है. तो उतना टाइम के बाद फिर रॉजर बैकन ने बोला. उसके बाद उसके करीब 300 साल के बाद जिरोलामो प्रेकास्टोरो, इन्होंने भी कहा डिजीज आर कॉज्ड बाय सम इनविजिबल क्रीचर्स, but you required a microscope to see them. That was not there, isn't it? That was discovered by Antony van Leeuwenhoek. The time was 1676 probably. हाँ, 1676. तो ये जो organisms इसको उन्होंने कहा animalcules, because बैक्टीरिया नाम दिमाग में नहीं आया बात, बैक्टीरिया बोले. आप ही सोचो, माने अगर हम लोग छोटा करते चले जाएं इंसेक्ट को, इंसेक्ट्स जो हम लोग जानते हैं, देयर इज ए क्लास कॉल्ड इंसेक्टा, लार्जेस्ट क्लास. अगर पूरा लिविंग सिस्टम का जो एक पाई चार्ट बनाओ तो 50% से ज़्यादा, अगर एक पाई चार्ट बनाए, पाई चार्ट जानते हो ना, उसका 50% से ज़्यादा ये वाला पोर्शन इंसेक्टा का होगा, और बाकी में तुम्हारा एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब का अलग अलग टाइप जो है वो सब बाकी में ये सब होगा. कि अगर ऐसे सोचे कि बैक्टीरिया एक हाथ पैर के बिना वाला एक इंसेक्ट है, मतलब आप छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, तो आपको क्या होगा, हाथ पैर निकालना पड़ेगा, फिर वो भी निकाल दो तो फिर वायरस बन जाएगा, फिर वो भी निकाल दो वायरॉइड्स बनेगा, प्रियॉन्स बनेगा, स्मॉलर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू स्मॉलर. लेकिन वो लिविंग लाइक कैरेक्टरिस्टिक है उसमें, लाइफ लाइक एक्टिविटीज. वायरसेस को यू कैन नॉट कॉल देम नॉन लिविंग. The havoc that played during Corona, can you call them non-living after that? दोबारा आके धमकी दे जाएगा. ये एनिमलक्यूल्स का कहानी, ये लीवेनहॉक का छोटा सा ही है. उनके बारे में कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर लिखने के लिए आए तो 2 मार्क्स का ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा.
what is the contribution of Leeuwenhoek, Antony van Leeuwenhoek. His contribution was he made the first microscope, and he discovered the bacteria for the first time. He called them animalcules, very small microorganisms. Animalcules means what? The little animals, very very small animals. एंड इसको उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो वहाँ था वहाँ इसको भेजा भी फॉर पब्लिकेशन पर्पस और एक्सेप्टेड हुआ कि ओके